Well, it was a match that went right down to the wire, and it had a befitting end with Pakistan winning with that run out courtesy Mohammad Amir. It was always going to be close in the end, considering the kind of innings that we saw from Clarkson. But Pakistan were just brilliant in the field, and they have managed to draw the series, much to the delight of the fans of Gaddafi Stadium, Lahore, who've come out in huge numbers throughout the game. All right, there you go. Then Pakistan has managed to draw this series against New Zealand. You've got to say that New Zealand have played really well as well when you look at their performance just in throughout the series, and the kind of rotation policy that we've seen from them, the kind of players that we've seen from them. But Pakistan has made a good comeback considering they lost the last two matches. And the standout performance, of course, from their perspective today was Shaheen Shah Afridi, and he happens to join us today in the studio on pitch side alongside Arooj Mumtaz. Thank you so much to both of you for joining us. Shaheen, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया. Thank you. रोटेशन पॉलिसी का हमने सुना था कि रोटेशन पॉलिसी होगी इस सीरीज में, नजर भी आई, कुछ मैचेस आपने रेस्ट किए. आज की परफॉर्मेंस के बारे में बताएं. इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, जिस तरह से हम देखते हैं शाहीन शाह अफरीदी को, वही शाहीन आज हमें नजर आए. आई थिंक इससे पहले भी हम न्यूजीलैंड भी गए थे, तो हमारा मैनेजमेंट का भी यही प्लान था कि हमने लड़कों को चेक करें, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आपकी एक टीम खेलती है, आप बेंच वाले आपको कभी आजमाए ना हो, उनको चांस नहीं मिला. तो इन दोनों सीरीज़ का यही मकसद था कि हम जो हमारे बेंच के प्लेयर हैं, जो हमारे और 5-6 बंदे हैं, तो उनको प्रॉपर मौका दिया जाए. आई थिंक अभी तो वर्ल्ड कप बहुत करीब आ गया, सो इस दोनों सीरीज़ का यही मकसद था कि और लड़कों को अपॉर्चुनिटी मिल जाए, और लड़कों को पूरी अपॉर्चुनिटी भी मिली है. सो मेरे ख्याल से मेरा यही था आज़ादी कि यार जब भी मेरे हैंड में बॉल होता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने 100% दूँ टीम के लिए, और एज़ यूजुअल अगर बॉलिंग में नहीं होता तो बैटिंग या बॉल फील्डिंग में कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अपनी 100% टीम के लिए एफर्ट करूँ. अच्छा, ये बताएं कि जो रोटेशन पॉलिसी थी उसका मकसद ये था कि प्लेयर्स को रेस्ट भी मिले, थोड़ी सी एक फिजिकल फिटनेस होती है, उसको भी आपको ज़रा मेंटेन करना पड़ता है. तो अभी आपकी फिटनेस कैसी है इस वक्त? आपको कैसा महसूस हो रहा है कमिंग आउट ऑफ द सीरीज? बिकॉज ऑब्वियसली आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है, आयरलैंड भी है, इंग्लैंड भी है. आई थिंक फिटनेस के लिहाज से तो पहले तो ये कि ये सीरीज शुरू हुई तो PSL का लास्ट गेम ही खेला था अगेंस्ट क्वेटा. उसके बाद 36 डेज़ मैंने कोई क्रिकेट नहीं खेली थी. जाहिर सी बात है ईद आ गए, मेहमान वगैरह, सो उसके बाद इजी नहीं होता. काकुल की ट्रेनिंग भी, और कोशिश यही थी कि यार को 2-3 दिन ही मिली प्रैक्टिस का. सो यही था कि यार अपनी बॉडी को पहले टाइम दूं और फिर उसके साथ स्किल वगैरह पे काम करूं. तो बॉडी को जब टाइम मिलता है तो आप थोड़ा सा अच्छा फील करते हैं. तो ये 3 मैचों में काफ़ी अच्छा फील किया. कोशिश थी कि अपना रिदम वापस लाऊं और अपनी एक्यूरेसी पे वापस काम करूं. अच्छा रूज, आपने भी ऑब्वियसली शाहीन की बॉलिंग फॉलो की है थ्रू आउट दिस सीरीज. ये बताएं कि ऑब्वियसली हर मैच में तो एक बॉलर को स्विंग नहीं हासिल होती, कई ऐसे मैचेस भी होते हैं जहां कंडीशंस ऐसी होती हैं नहीं मिलती. आपने किस तरह से इनकी बॉलिंग को एवेल्यूएट किया, और आज की बॉलिंग आपको सबसे ज़्यादा अच्छी इनकी बॉलिंग का कौन सा एस्पेक्ट था जो आपको अच्छा लगा? देखिए, शाहीन की बॉलिंग की एक बात ये है कि ही इज़ ऑलवेज लुकिंग टू पिक अप विकेट्स, एंड इन दैट ये हमेशा विकेटों को अटैक करते हैं. तो आप मेजॉरिटी इनकी डिसमिसल्स भी देखें तो बोल्ड या LBW होते हैं, बिकॉज वो बैटर को हमेशा इन प्ले रखने की कोशिश करते हैं. तो वन ऑफ हिज बिगेस्ट लीथल वेपन्स इज दैट. बीच में बात हो रही थी थोड़ी सी कि इनका पेस ड्रॉप हुआ था, बट अगर मैंने इनकी स्पीड्स निकाली तो ही वॉज कंसिस्टेंटली अराउंड दैट 140 मार्क, और उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है. बाजिद खान ने इनसे पोस्ट मैच में भी पूछा, सो ही फेल्ट ही हैड गुड रिदम. अगेन ऑलवेज लुकिंग टू अटैक द स्टम्प्स. 4 इंपॉर्टेंट विकेट्स. जो पहले ओवर में इनका ब्रेक थ्रू का कमाल है. शाहीन 50 विकेटें आपकी T20 क्रिकेट में हैं पहले ओवर के अंदर, तो इंटरनेशनल में भी अच्छी खासी हैं. तो आई जस्ट फेल्ट के रिदम आता है फिटनेस से, कॉन्फिडेंस से. जितनी आप बॉलिंग करते हैं, इन्होंने पहले मैच के बाद मुझसे बात की थी कि वो 36 दिन तकरीबन हमने क्रिकेट नहीं खेली थी. सो इट्स एंड ऑल्सो व्हेन यू आर बीइंग रेस्टेड एंड इन बिटवीन, तो ज़रूरी होता है, क्योंकि ही इज़ अ गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान. ही इज़ वन ऑफ दोज मैच विनर्स फॉर बाबर. एंड खुद आई एम श्योर सीनियर लीडरशिप ग्रुप का भी हिस्सा है, तो इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी होती है, अब तो जिस तरह खुद भी कह रहे हैं कि बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग तीनों शोबों में ही कैन टर्न द गेम अराउंड. आई थिंक जो सबसे उनका लीथल एस्पेक्ट है, जो पाकिस्तान का वेपन है, वो इनका नया बॉल है. और शाहीन, मैं आपसे खुद ही पूछना चाहूँगी कि कभी कभार, जैसे जैनब ने कभी कहा कि स्विंग नहीं मिलता, तो हमने देखा है कि कभी कभार
एटलीस्ट मेरा ओपिनियन है कि आप फिर भी कोशिश करते रहते थे कि कहीं स्विंग मिले। अब हमने देखा कि आप बड़े जल्दी अडेप्ट कर जाते हैं और लेंथ को हिट करते हैं या वो एंगल अक्रॉस खेलना शुरू कर देते हैं। उस पे कितना आपने काम किया और वो कितना विकेटों से कि कौन सी विकेट कैसी खेली उससे आता है? पहले तो ये कि मेरे ख्याल से जब आपको किसी चीज़ से सक्सेस मिलती है उसको छोड़ना नहीं चाहिए बड़ी जल्दी। आपको इर्द गिर्द से बातें आती हैं कि यार अटैक बहुत हो रहा है ये वो। पर्सनली जब अगर एक प्लेयर को फील होता है कि ये मेरा स्ट्राइक बॉल है और वाई नॉट अगर मैं इस पर अटैक करूँ। हाँ, शॉट भी पड़ते हैं, क्रिकेट है और ये क्रिकेट है भी टीम गेम है। आपको एक बॉलर को एक दो बॉलर को अटैक के लिए छोड़ना चाहिए। जैसे बैट्समैन होते हैं दो जाते हैं हिटिंग करते हैं। तो अगर मेरा स्ट्राइक बॉल है तो वाई नॉट मैं उस पर ज़्यादा जाऊँ और उसमें मुझे सक्सेस मिल रही है। हाँ, विकेट को भी ज़रूर देखना चाहिए। जब आप दूसरी बॉलिंग करते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा उसके हिसाब से ही जाना चाहिए कि यार क्या विकेट क्या डिमांड कर रहे हो उस टाइम। तो आज भी यही था कि आप जब वो लोग बॉलिंग कर रहे थे तो बहुत थोड़ा सा लो आ रहा था। तो जब हम भी बॉलिंग कर रहे थे तो यही बात कर रहे थे कि यार बॉल लो आ रहा है, जितना स्टम्प में रखें तो शायद हमें विकेट मिल सकती है। मेरे ख्याल से जो आपका स्ट्राइक बॉल है वो आपको कैरी ऑन करना चाहिए। अच्छा, ये बड़ी अच्छी आपने बात की कि यू नो ऑब्वियसली बैक योर स्ट्रेंथ्स, जो भी आपकी स्ट्रेंथ्स हैं। ये बताएं कि विकेट इन द फर्स्ट ओवर एक आपकी स्पेशलिटी बन चुकी हुई है, लिटरली यू आर नोन फॉर दैट। तो हाउ डू यू मैनेज टू डू इट सो फ्रीक्वेंटली? आसान नहीं होता। कोशिश करता हूँ कि जाहिर सी बात है जैसे बैटिंग की तरफ से होता है कि यार एक स्टार्ट अच्छा मिल जाए बैटिंग यूनिट को, तो यही बॉलिंग यूनिट को भी यही होता है कि पहले ओवर में अगर ब्रेक थ्रू मिले तो उसके जो बैटिंग साइड के होते हैं पहले तीन ही स्ट्रॉन्ग बैट्समैन होते हैं जो रीढ़ की हड्डी होती है टीम की। तो आपका यही होता है कि यार अगर इसमें से एक दो आउट हो गए तो आपकी टीम थोड़ा सा ऊपर आ सकती है। और मेरी यही कोशिश होती है कि स्ट्राइक दूँ, लेकिन ज़्यादा आदत भी नहीं बनानी चाहिए। जब आउट नहीं होते तो फिर कहते आउट नहीं किया। लेकिन टीम गेम है ओवरऑल, एज अ टीम जितना आप खेलेंगे आपको सक्सेस मिलेगी। इंडिविजुअली अगर आप कहें तो फिर आप गोल्फ खेल सकते हैं इसके लिए। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि यू नो ऑब्वियसली यू आर ग्रेट फ्रेंड्स विद हारिस रऊफ एज वेल एंड ही इज बीन स्ट्रगलिंग, उनकी एक इंजरी का सिलसिला चलता आ रहा था। कोई उन पे अपडेट है उनकी तरफ से? मतलब ऑब्वियसली यू आर टॉकिंग टू हिम एज वेल, क्या अपडेट है उनकी इंजरी पे, उनकी फिटनेस पे? बहुत से उनके फैंस हैं जो जानना चाहते हैं कि उनकी रिकवरी कैसी जा रही है। हारिस लास्ट 3 डेज से उसने बॉलिंग स्टार्ट की है अल्हम्दुलिल्लाह। उसने जब आप खेलते हैं जाहिर सी बात है आपको फिटनेस का कोई आइडिया भी नहीं होता, तो ये उसके लिए काफ़ी अच्छा टाइम है कि यार एक तो वो थोड़ा सा क्रिकेट से दूर रहे, दिमाग भी ठंडा हो जाए, फिटनेस पे भी काम करे। और अभी 2 दिन से बॉलिंग की है उसने, काफ़ी अच्छा नज़र आया कि उसने बॉलिंग स्टार्ट की है। होपफुल आयरलैंड सीरीज़ मैं खुद ही उसको प्रेफर करूँगा कि ना खेले, टू अर्ली फॉर हिम। और 4 मैच है इंग्लैंड में वो खेल सके फिर वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि वो आपका मेन बॉलर है मिडल में। आपको उसने पाकिस्तान की तरफ से 90 विकेट लिया और आप उसका अगर ओवरऑल T20 या वनडे रिकॉर्ड देखे तो इज़ अ मेन बॉलर वाइड बॉल क्रिकेट में जो मिडल में आपको विकेट दे सकता है। और उसकी पेस का तो बड़ा ही हुआ है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद आप ऑब्वियसली वापस जा सकते हैं टू गो बैक टू द ड्रेसिंग रूम। ये बताएं कि वर्ल्ड कप गोल, जब आप वर्ल्ड कप को देखते हैं, ऑब्वियसली सारी जो प्रेपरेशन अभी तक हो रही है वो वर्ल्ड कप के लिए हो रही है, जो टीम कॉम्बिनेशन बन रही है वो भी वर्ल्ड कप के लिए हो रही है। तो क्या आपका कोई पर्सनल उस तरह से गोल है, कोई ड्रीम है फॉर द वर्ल्ड कप? एंड नॉट टू फॉरगेट द काइंड ऑफ कंडीशंस दैट विल गेट, यू नो न्यूयॉर्क में भी एक मैच हो रहा है जो कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, जिसकी कंडीशंस का लोगों को ऑब्वियसली नहीं पता क्योंकि वो तो ग्राउंड अभी बन रहा है। बट देन यू हैव द कैरिबियन कंडीशंस एज वेल। सो व्हाट्स योर एक्सपीरियंस वहाँ का ओवरऑल जिस तरह से आप देखते हैं? एंड दूसरी चीज़, आपका पर्सनल क्या है, जिसे कहते हैं ना एक विजन होना या ड्रीम होना? देखिए, पहले भी तो ये कि टीम का कॉम्बिनेशन अभी रेडी होना बहुत जल्दी ज़रूरी है, क्योंकि अभी 2 सीरीज़ ही हैं और उसमें अभी हमें आइडिया भी नहीं है कि आयरलैंड में पूरे मैचेस होंगे कि नहीं, क्योंकि वेदर जाहिर सी बात है वेदर का काफ़ी इफेक्ट होगा। दूसरा ये कि हम में से उधर वेस्ट इंडीज़ में प्लेयर खेले हैं, लेकिन मैं पर्सनली टेस्ट मैचेस खेला हूँ। जब लास्ट मेरे टेस्ट मैच था T20I की खेले थे, 5 में से बारिश हुई थी। जब जितना सुना है कि उधर बॉल थोड़ा सा अच्छा रिवर्स भी होता है और हाई स्कोरिंग गेम्स इतने नहीं होते हैं, अगर CPL की हिस्ट्री भी उठा के देख ले। पर्सनल गोल यही है कि यार तीनों शोबों में जितना मैं अपनी टीम के लिए कर सकता हूँ और जितना मैं एफर्ट कर सकता हूँ, वो कोई हेल्प अगर टीम को भी चाहिए मेरी तरफ से तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर टीम। चलें, ठीक है। थैंक यू सो मच शाहीन फॉर बीइंग हियर एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, बहुत सी आगे भी सीरीज है, सो थैंक यू सो मच एंड उम्मीद यही करते हैं आप इसी तरह परफॉर्म करते रहें। थैंक यू Well, there you go. You heard it from Shaheen Shah Afridi. Obviously, a very fantastic performance overall, I would say.
He was rested for a few matches, but today he was coming out and playing like the Shaheen we know, basically. On that note, we'll be taking a short break, and when we come on the other side, we'll be joined by Chris Harris. Back on pitchside in a series that has ended up in a drawn manner. New Zealand can be rather proud of themselves considering the way they came into Pakistan with a second string side and managed to draw the series. Pakistan played really well today and you saw Osama Mir also amongst the wickets performing really well. So a lot of tried and tested combinations which have worked for them. Some areas of concern still remain. But speaking of New Zealand, I think they can be really proud of themselves, and I've got Chris Harris in the studio to talk about that. Chris, lots to take back for New Zealand from this particular tour. Like I said, the fact that they came with a second string side, they can really be proud of themselves. Yeah, absolutely, and it was just some wonderful experience for some young players that perhaps wouldn't have got that opportunity for a few years. So to see our emerging talent and what's to come next is very, very exciting. There wouldn't have been too many people expecting this young side to come over here in foreign conditions against the top Pakistan side and to draw 2-2. So I think the whole team can hold their heads very high. You know, from this side, we're probably going to see 5 members from this side go to the World Cup, but I'm sure there's some excitement back in New Zealand because of some of the talent that they've been on display. You know, like Tim Robinson, we saw a bit of a cameo from Clarkson today, and the 2 quick fast bowlers, Ben Sears and Will O'Rourke, and even Zach Folkes. So all the people that got some experience, it's going to hold them in very, very good stead, and that's what New Zealand's got to look forward to, that future. So things looking very, very exciting. Well, it was an important game for Pakistan just in terms of, in the context of this series, that New Zealand was ahead. They were leading the series, and it was important for them to get off to a flyer. We saw a lot of positive intent from Babar Azam today with his impeccable timing. He's also our master blaster for the day. Yeah, the skipper put his hand up tonight and he came out looking all guns blazing from the get-go. Played some big strokes and he's obviously copped out of criticism in terms of strike rate and generally batting through the middle phase, and he kept going. 69 of 44, 6 boundaries, 2 sixes, striking at 156, put Pakistan ahead. Yeah, it's all about setting the tone at the top, and Chris, that's been the one aspect where Pakistan has struggled in terms of strike rates. There's been a lot of discussion around that, but it was good to see Babar lead from the front today. Yeah, it was fantastic. When your team is under pressure, you want your senior players to stand up, and who more senior, who better to stand up than your skipper. Rouge touched on it. There's been some strike rate issues, but he came out and for me played the way that I think he needs to play for Pakistan to do well. It was a captain's knock. He led from the front. And then talking about senior players, Shaheen Afridi as well stood up. 2 senior players when the team was under pressure, and you know, I thought Babar, great captain's knock and fabulous shots he played today. Brilliant. Good positive intent from Babar Azam today, Rouge. We need more of the same. More of the same, and it should just be the consistent way that our batters, at least in the top 1, 2, 3, 4, should be playing. And I touched on it on comms as well, that it's the same people, it's the same players. It's just about recognizing and accepting what's required and then coming out and delivering. At least trying to. And in trying to, more often than not, when you've got the skill of Babar Azam, it will pay off. So it's just about that mindset switch that needs to be sort of put on and put on permanently. It'll take a little bit of time to almost revolutionize that mindset, to change the brand of cricket that Pakistan needs to play to remain contenders for global events. Because that's what you want. We're aiming to win World Cups here. And hence why these things matter, and it was one area of concern, the strike rates, and especially batting through that middle phase, the 6 hitting ability, the scoring rates, because that is one big issue which will get Pakistan over the line if it's done well, and tonight it was a good example of how to do it. Absolutely, lots of positives from this particular game. Pakistan was also really good in the field with the bat and the ball. When you're talking about their bowling, they needed to have, exhibit the kind of control that we saw. After the first few overs, I think they managed to pull things back
a bit. Let's have a look at the New Zealand fall of wickets. It was Shaheen Shah Afridi in very Shaheen Shah Afridi fashion, cleaning up Tom Blundell, top of off, and he was away. It was Osama Mir for me who actually pulled it back because Tim Seifert got into a big partnership. He came out, he bowled a wicket maiden, he got the pressure on, trying to hit him across the line. And this one, sharp catch from Babar Azam, big wicket of Jimmy Nish, Michael Bracewell from Shadab Khan. And then Imad came in, different role for him, slightly newer ball, but with his quick balls, it is slightly difficult to get him away. Then it was wickets, one after the other. Jimmy Neesham, the big wicket, you know what he can deliver in the T20 stage in terms of finishing games off. And then, well, Shaheen Shah Afridi was back again, 1, 2, and finished off proceedings also. It got close towards the back end. This was a run out which I feel took away that cushion of an extra wicket for New Zealand. They were right into the game till that very end. And then Amir with the wicket towards the back end. They had to push for 2, but it was all done by them. Well, for one thing for sure is that there'll be some interesting choices for Pakistan when they are making that team, that squad for the T20 World Cup, considering Osama Mir also performed really well today. So who's going to make it into that squad is going to be something that the think tank needs to be working on, considering that deadline is on the 1st of May. On that note, we'll be taking another breather. Be back just in a bit. Back on pitch side, and we've seen plenty of fast bowling at display today. From Pakistan's perspective, Shaheen Shah Afridi was the standout. From New Zealand, we saw Will O'Rourke in that previous T20. He was magnificent with the ball. Ben Sayers has been expressed as well. But who makes it to the fastest delivery of the match? Let's find out. Well, you've got Ben Sayers and Shaheen Shah Afridi is right at the bottom, but Ben Sayers is leading the charts with 143.7 kilometers per hour. He is right at the top. Even the second, third and fourth are all belonging to Ben Sayers. So job well done overall by New Zealand. Ben Sayers is leading once again in this fastest delivery category. Well, this series was always going to be important in terms of the combination that we're looking at for Pakistan, and I suppose for New Zealand as well when you're looking at making that squad rouge. Does Pakistan at the end of the series, when you evaluate how it went for them, do they have all the answers so far, or is it just sort of work in progress for them? Well, I'd imagine they should have all the answers. They've tried their entire bench. Some injuries provided another opportunity to actually plug in players where they probably have the best run possible. Their spinners showed what they could do, their fast bowlers as well, even Abbas Afridi got a fair share, Usman Khan as well. I think they've done all the preparation, they've tried all the combinations. It's about who they feel is the best 15 on that plane into firstly Ireland, England and then into the World Cup. I would, like Shaheen said when he was here earlier, the combinations should be sorted now. The experimentation is done. Now what you believe is your best 11, that's what you now should play against with Ireland and England, and there should be no panic. Because if something doesn't go along nicely in Ireland, I don't think Pakistan needs to sort of derail from that, because otherwise that means your plan A wasn't correct. So I feel all preparation should be done. The 15, the best choice 11, option A and option B given the surfaces. But Ireland and England should be full strength, make it so tough for people to get in from the bench. So that's the kind of 11 that you want, who don't really give their place away. So it should be that kind of a ruthless, competitive attitude within the side, that my place is very sort of up for grabs, not just for free, but I need to sort of consistently perform, do what my role is. We want those match-winning knocks, either it's with ball, bat or in the field, as opposed to runs or wickets which go in vain. So I just feel that come the World Cup, preparation's done. It's just about which plan A, B, C Pakistan plans to choose. All right, we'll have to wait and find out how that goes for them. But from a New Zealand perspective, do you think their squad is pretty much sorted?
Yeah, I think it was pretty much sorted before they came over. There was probably a few question marks before this series, but I think they've been answered. You know, that if I'm taking a guess from this particular side, I think Tim Seifert, Jimmy Neesham, Michael Bracewell, help me out, Rouge. Chapman? Mark Chapman, of Ish course, Sodhi. and Ish Sodhi. They would be the five, I think, that would go from the side. So I think New Zealand have pretty much sorted. The good news is, though, we've got a little bit of an aged seam attack when you look at Trent Bolt, Tim Southey, Lockie Ferguson. So to see the likes of Ben Sears, Will O'Rourke, New Zealand are in good hands with the fast bowlers in the future. So that's exciting. All right. So if I were to ask you, considering you've got plenty of experience playing World Cups, 4 times you've participated in 4 World Cups actually. So if I were to ask you, who do you think is going to be making it to that top 4? I know it's really early on. Ooh. It's really early on, but by now a lot of the teams have sort of got their 15 together, and you know what they'll be taking with them. So just based on that, you know, just a guess. So you're putting me on the spot, aren't you? I am. I think it's really hard to ever go past Australia. In recent times, in all white ball World Cups, they're always there or thereabouts. Hate saying it, but Australia. I think also India are dangerous, South Africa and England as well, and I think New Zealand will be there. And if Pakistan can sort out their strike rate, Rouge, I think they could be there as well. Rouge, what about you? I'm asking you the same question. Well, given the T20 World Cup, and in spite of all the issues that we've highlighted, I think Pakistan's in that top 4. The nature of the surfaces will suit us, but you can't get past Australia, India, and I'd like to see South Africa in there as well. All right, this is pretty interesting when we are talking about World Cup and combinations, and I guess this is what the series was all about, really. It was about trying different combinations, you know, utilizing that rotation policy that we keep hearing about. But thank you so much, Rouge, and thank you so much to Chris. Chris, it's been a pleasure having you in Pakistan. You've really enjoyed yourself, of course, on commentary and off commentary as well, playing a lot of golf and getting beaten by all the girls that have ganged up on you, Lisa and Rouge. So thank you so much. Thank you it's been amazing to be in Pakistan. Well, it's always been a pleasure to have you here, and thank you so much, Rouge. I'm sure we'll get to see you again at some point. But fantastic series overall, great result, I guess, for both the sides. When you look at the kind of performances that we've seen and the kind of results that we've seen from Pakistan and New Zealand, just in terms of, like I said, combinations. Now, I think a lot of the questions would have been answered for that think tank. There were a lot of concerns as well, some injury concerns. So Pakistan has some time before they'll be heading towards, you know, Ireland and England. So thank you so much for watching. I hope you guys have enjoyed our coverage. But that's pretty much all that we have for you guys from here. Until next time, it's goodbye.